Good morning, class. Welcome to St.PETERS School. This is your science class, and in previous class we are on the chapter number 3, that is force and pressure, and we have already almost covered all the topics. Only the two topics is left: what is buoyant force and what is Archimedes principle. So it is very important. Try to understand this term, what is buoyant force, and once the class is over, you what you are going to do, you just go through the point of the books also कि क्या होता है बाइंड फोर्स बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि बाइंड फोर्स क्या होता है बिकॉज लेटर ऑन लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग like lots of question will be there upon the Archimedes force and the buoyant force. Okay, so what is buoyant force? When an object is immersed in a liquid, कभी भी कोई सामान को अगर आप पानी के अंदर डुबोते हो, okay? So when an object is immersed in a liquid, it experience an upward force known as buoyant force. आप देखोगे कि वो पानी उसको प्रेशराइज करता है उस सामान को ऊपर ढकेलने के लिए मतलब लाइक it is not like that कि every object will sink into the water like some object when you will try to press in the water क्या होगा water उसको वापस ऊपर की तरफ ढकेलता है for example bottle जब भी आप पानी के अंदर immerse करने का try करोगे you will see that the water force bottle upward. Okay, so this force is only called the buoyant force. This phenomenon of experiencing an upward force is known as buoyancy. It is an upward force exerted by fluid that opposes the weight of an object immersed in a fluid. As we know, the pressure of the fluid column increases with the depth. Thus, the pressure at the bottom of the object submerged in the liquid is greater than that of the top. Okay, the difference in this pressure result in net upward force on the object which we define buoyancy. अभी क्या हुआ when like for example when you immerse the bottle into the water हमने ये बात पढ़ी थी कि जैसे जैसे हम पानी के अंदर जाते हैं डेप्थ में जाते हैं pressure will increase. So यही reason होता है कि जब बॉटल को हम एकदम अंदर इमर्स करने का ट्राई करते हैं देन व्हाट हैपन वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होती है और बॉटल का जो वेट होता है वो कम होता है इसलिए वो बॉटल जो क्या होता है वापस ऊपर की तरफ उस अंदर के प्रेशर की वजह से वो ऊपर आ जाता है सो दैट इज द रीजन एंड दिस इज कॉल्ड द बायंसी फोर्स. वाई डज एन इसीलिए जो अगर बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होता है दैट दैट कैन ओनली सिंक बिकॉज वो उस डेप्थ के प्रेशर से ज़्यादा उसकी वेट होती है इसलिए वो सिंक हो जाता है बट द विच इज़ लाइटर ऑब्जेक्ट इट कैन दे कांट सबमर्ज वो वापस आ जाएगा. Why does an object float or sink in water? Why does an object float or sink in water? क्यों होता है ऐसा जो कुछ जो होते हैं वो sink कर जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो float कर जाते हैं. So that is the reason I already given you. Even considered a single column of liquid, then it can be considered as concatenation of the many overlying layers, one over the other with fluctuating pressure. The pressure at the bottom of the liquid would be greater than at the top. And this is the reason that we, as we go down in the liquid, number of the layers of the liquid that are overlying the layers one over of the other increases. कुछ नहीं, you just understand in a simple way. डेप्थ में प्रेशर ज़्यादा होता है तो जो जिस भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा उस प्रेशर से ज़्यादा होगा वही सिंक करेगा अदरवाइज दे विल फ्लोट. Okay, owing to the difference in the pressure amid the layers that there tends to be made a force being applied to it in the upward direction. This force leads to the acceleration of the object that has been submerged in the upward direction. The force is always in the vertical direction. It can also be said that the magnitude of the upward force is basically equivalent to the difference in the pressure of the topmost and the last layer, and also equivalent to the weight of the fluid that has been displaced. ओके, अब ऐसा माना गया है कि अगर आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर सिंक करते हो सॉरी मतलब उसको डुबोते हो तो आप देखोगे कि उसको बैलेंस करने के लिए कुछ वाटर बाहर आ जाता है कुछ वाटर बाहर आ जाता है तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर लेयर एंड द लोअर लेयर एंड दैट इज कॉल्ड वो जब हमें बायंसी निकालनी होती है तो व्हाट वी यूज टू द वाटर विच कम्स आउट व्हेन द ऑब्जेक्ट सिंक इनटू द लाइक आप देखोगे कि
Suppose your glass is full of water, okay, and you are trying to sink something in a water, किसी कुछ चीज डाला, आप देखोगे कुछ पानी बाहर आ जाता है, तो क्या होता है, वो वेट को इक्वलाइज करता है। इक्वलाइज क्यों करता है, मतलब जब वो ऑब्जेक्ट जो जाता है नीचे, वो उसको और अंदर के प्रेशर में डिफरेंस जो होता है उसको इक्वलाइज करके, जो बाकी का वाटर एक्स्ट्रा होते हैं, जो एक्स्ट्रा प्रेशर पानी के अंदर डालते हैं, उनको वो बाहर कर देता है, सो दैट ऑब्जेक्ट कैन easily submerged. So that type of water is equal to the difference between the that weight, their weight, ऑब्जेक्ट और पानी के वेट के डिफरेंस का ही वो एक्चुअली वैल्यू होता है। हाउ आर buoyancy and density related? Buoyancy or the buoyant force is directly proportional to the density of the immersed fluid. buoyant force, अगर डेंसिटी वाटर की ज़्यादा होगी तो buoyant force भी ज़्यादा होगा, और अगर डेंसिटी कम होगी तो कम होगा। The buoyant force depends on the volume of the body immersed, which is equal to the volume of fluid displaced, the density of the fluid. अभी मैंने बोला कि अगर आपके जैसे ग्लास फुल था, फुल फुल है, तो पानी बाहर आएगा क्योंकि उसको वेट को इक्वलाइज करना है। लेकिन अगर पानी कम है तो इन दैट केस नो वाटर विल कम आउटसाइड, यस, बिकॉज ऑलरेडी जो वेट होगा वो इक्वलाइज हो जाएगा। ओके, सो वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड होता है। Okay, next, what is Archimedes principle? Archimedes, the upward buoyant force that is exerted on body immersed in a fluid, whether the partially or the fluid submerged, is equal to the weight of the fluid that the body displays and acts in the upward direction at the center of the mass of the displayed fluid. Okay, so you can try this experiment at your home. आर्किमेडिस प्रिंसिपल का ये बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और आप अगर इसको चाहो तो घर पे ट्राई कर सकते हो। टेक अ मग फिल्ड विथ वाटर वेयर टू द ब्रिम एंड प्लेस्ड इट इन एन एम्प्टी बाउल। एक मग लेना है, उसके अंदर पूरा पानी ब्रिम तक भरना, मतलब उसके एकदम एंड तक भरना है आपको, ओके। उसके टॉप, एकदम टॉप लेवल तक पानी भरा होना चाहिए। ब्रीमिंग मतलब होता है जो ओवरफ्लो होता है वाटर का, उसको बोलते हैं ब्रीमिंग, ओके। So now take any solid object you like to measure its weight using a spring balance. Note this down. Keep the object attached to the spring balance and submerge it in the water. Just make sure that spring balance is not submerged. Now note down the weight shown by the spring balance. You will notice that it is less. It is less. Some water will be displaced into the bowl. Collect this water and weight it. You will find that the weight of the water will be exactly equal to the loss of the weight of the object. अभी आप देखोगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को पहले आप वेट कर लो, और जब उसको आप पानी के अंदर डालोगे एंड तब उसको वेट करोगे, तो यू विल सी कि उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कम है, कम आपको आएगा। वाई? तो जो वाटर जो बाहर आएगा उसको सबमर्ज करने से, वो वेट और उस वो लॉस वेट के बराबर होगा, एंड दैट इज ओनली कॉल्ड द आर्किमेडिस प्रिंसिपल। ओके, आर्किमेडिस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबेते हो और कुछ पानी जब बाहर आता है, तो वो दैट इज इक्वल टू द लॉस ऑफ द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। एक्चुअली वो बैलेंस करने का ट्राई करता है, सो दैट इज एक्चुअली द आर्किमेडिस प्रिंसिपल। ओके, so we have completed this chapter in next. Okay, so density and relative density. Let me tell you what is density and relative. In order to understand the concept of buoyancy properly, let us understand the concept of density and relative density. So density, as I told you, कि density के से buoyancy force directly proportional है, and density of the material is defined as its mass per unit volume. Density क्या होता है? Mass its per volume होता है, and is mass per unit volume, it is measure of how tightly matter is packed together, कि कितना वाटर में जो उसका जो मॉलिक्यूल से कितना टाइटली पैक है वो दिखाता है डेंसिटी। ओके, फॉर एग्जांपल ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू वाटर। So in numerical terms, density is defined as the mass per volume. The SI unit of density is measured using kilogram per cubic meter, and the density is 0.9584 grams
per cubic centimeter at 100 डिग्री सेल्सियस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, यू हैव टू रिमेंबर दिस कि डेंसिटी कितनी होती है 0.9584 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. ये क्वेश्चन जनरली आता है. रिलेटिव डेंसिटी is of a substance is defined as the ratio of the density of the substance to the density of the water. हाँ, in comparison to अगर कोई भी अदर लिक्विड की जो डेंसिटी कंपैरिजन की जाती है इन कंपैरिजन टू वाटर, that is called relative density. Okay, that's all for today. Then if you like write, you can write it here like this: relative density is equal to density of substance by density of water at 4 degrees Celsius. Okay, now that's all for today. In next class, what we are going to is we are going to start with the question and answer of the chapter number 3. So till the time, what you are going to do, you are going to revise all the points, go through the chapter, go through the all the important points given in video, given in your book, so that it will be easy for you to solve the question and answer. So till the time, thank you, bye bye, and take care.